अभी जैसे आईपीओ मार्केट आप भी जो बता रहे हो, लाइक इट इज़ लाइक गोइंग क्रेजी इन द सेंस कि बहुत नंबर्स बढ़ रहे हैं एंड बहुत सारे आईपीओज भी आ रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आईपीओज ऑल्सो आई थिंक दिस ईयर वुड हैव बीन लाइक द हाइस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज गोइंग पब्लिक. तो उसमें लोग कैसे पैसे बना सकते हैं, या तो कैसे उसमें मतलब आपके हिसाब से क्या कौन सी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? See, that's a great question because this is also a big trend in 2024 wherein the entire pre-IPO market became super hot. This year, in fact, we work with HNIs, Ultra HNIs as a wealth company. The hottest segment is people want to invest before the company IPOs because most of the IPOs are listing with good gains. So to give you a number, yes, this was the biggest IPO year, both in terms of value and volume. So in terms of value, I told you 1.6 lakh crore, and in terms of numbers, SMEs में बहुत यूफोरिया हुआ. मेन बोर्ड जो मेन लिस्टिंग एक्सचेंजेस हैं उसमें इतना यूफोरिया नहीं हुआ है, बट SME में थोड़ा यूफोरिया हो गया था. तो वहाँ पे तो क्रेजी हो गई थी, मतलब क्रेजीनेस. 200-250 कंपनीज रेज किए हैं. एवरी एक जोक मैं बता रहा हूँ कि एक SME कंपनी मैं पढ़ रहा था जिस विच गॉट ओवर सब्सक्राइब 1000 टाइम्स. ओके, उसका नाम है फ्लिप द कॉइन, टॉस द कॉइन और फ्लिप द कॉइन. आई एम सेइंग जोक, इस कंपनी का नाम ही है टॉस द कॉइन और वो 1000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है SME में. बाय द वे, ऑन अ सीरियस नोट, SME में पूरी चीज़ें खराब नहीं है, बट अ लॉट ऑफ बैड एप्पल्स कम व्हेन अ स्मॉल पोर्शन गेट्स disproportionate money. Whereas in the IPO market, a lot of good companies. See, India market is also maturing. In fact, if I was reading it right, next year may even be a bigger IPO market than this year. Expectations are कि इस साल 1.6 lakh crore raise हुआ है. Next year we should cross 2 lakh crore. And there are some very big IPOs coming. यार मतलब next year if you see a lot of fintech new IPOs will come, but even many global companies will come for IPO in India, जिनके भी इंडिया नाम है, which is not bad. By the way, to give you a caveat, just because IPOs are happening, it's not bad. What does it show is Indian market is maturing. And I'll give you a number. Nifty 500, which is a proxy for the 500 biggest companies in India, the promoter ownership of Nifty 500 in India is 52%. Whereas US के जो टॉप 500 कंपनी इंडेक्स है S&P 500, उसका इंसाइडर प्रोमोटर ओनरशिप इज ओनली 12%. So the US market is more institutionally owned and driven because it is a older market. US का exchanges markets are 100 years old. इंडिया में तो मार्केट लिबरलाइजेशन ही 1991 में हुई थी, तो मार्केट में वॉल्यूम भी लास्ट 10-12 साल में ही हुए. सो दिस इज अ नेचुरल स्टेज वेर इन ग्रेजुअली, इफ यू आस्क मी 20 years out, promoters will give way to lot more institutional ownership, which will be good also in terms of governance and those kind of things. So because a lot of IPOs are happening, yes, there is caution, as I explained in this chart, कि जब IPO बहुत बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर में एक वोलेटिलिटी आती है, बट डायरेक्शनली इट इज़ नॉट बैड. बट आई एम जस्ट सेइंग बी प्रिपेयर फॉर सॉफ्टर ईयर्स. मतलब इफ यू आस्क मी, our view is this will be a great year to also diversify. Now this is a theme I really want audience to understand. This will be a year for diversification very, very strongly. Don't go all in on equities. We don't think that, unless you like just are all about equities, but people should have a balanced allocation across equities. And within equities, mutual fund works better for people because वहाँ पे एक्सपर्ट्स का काम ही यही है कि कहाँ पे आप बचे रहोगे. सो नेक्स्ट ईयर इज अ लॉट अबाउट नॉट मेकिंग मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग बिग विनर्स. Right. इज हाउ आई वुड पुट. Right. So diversification should happen through fixed income. You can if you have a good corpus, if your savings, say if for the HNIs and 1 CR above, they should definitely look to explore the pre-IPO market also. Structured deals. So we do all of that for the family offices. But for a normal investor, please ensure you're not 100% in equities for the next year. Have a decent fixed income allocation. Put some money in gold. It's a good hedge.
So that is how I see. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.